दूध क्या करा दो दूध ब्रश करके आओ मुंह धो के आओ फिर उसके बाद जाओ देखो जाओ ब्रश करो पानी गरम है मिलाया जल्दी जाओ जाओ खा पी लो फिर उसके बाद ब्रश कर लेना जाओ प्लास्टिक है इसको फोल्ड कर लेना जुकाम हो रहा है जुकाम अभी दवाई ला देंगे जुकाम खुल जाएगी ना राजकुमार मोस्ट वेलकम है भैया आपका जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम भैया
कॉमेडियन भाई, जय भीम भैया, जय भीम। स्वागत है आपका भैया हमारे लाइव में, कैसे हो आप? वहाँ प्लेट है, लेके आ। छोटू भी तो चाय से दो दे रहे हैं।
चलो अब तक खेली 8 हो रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा। दीपक भैया स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो? 8:40 तक करना थी पूरी वाली सोई साथ। अजय कुमार, हेलो हेलो भैया, मोस्ट वेलकम आपका हमारे लाइव में। जय भैया, कैसे हो आप?
जय भीम नमो बुद्धाय। भारती भाई कैसे हो? स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो भारती भाई आप? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। सेम टू यू भाई, थैंक यू। मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आपका नाश्ता हो गया है दीदी? अभी नहीं भाई। आपका हुआ भारती भाई? थैंक यू सो मच। आपका नाश्ता हुआ? अभी मैं सोकर जगा हूँ दीदी। बना लो भाई, बना खा लो कुछ। शायद मेरा आज एग्जाम फाइनल हो जाएगा। कब से है भैया? भारती भाई कब से? आज जाना है? कब जाना है? तो मैं कल घर चला जाऊंगा। ओके भाई। गाय 11 बजे से जाता हूँ। कुछ बना खा लो फिर। जय भीम भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। कल मैं आपको बहुत इंतजार किया था दीदी। भारती भाई पता आपको, कल से लेकिन मिला कहीं नहीं। नहीं, मैं गई थी। मैंने परवीन भैया के लाइव में 1 मिनट जाके मैंने बोला था, भैया सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगी किसी के सपोर्ट में। रात में क्या हुआ ना, कल मथुरा, वहां नहीं, मथुरा में यूपी से बसें आ रही थी ना, मथुरा में 7 बसें और 3 कार आपस में टकरा गई थी ना। जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसी में मेरे ससुर गांव से आ रहे थे और बड़े ससुर थे, उनकी भी उसी में डेथ हो गई। बस में थे, वो निकल नहीं पाए, उसी में पूरे जल गए थे, सिर्फ उनका कंकाल बचा था। तो कल वहीं से फिर वो भी लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे, डीएनए टेस्ट के लिए। तो फिर मिट्टी वहां से आई है रात में 7 साढ़े 7 बजे। तो फिर यहाँ मिट्टी 7 बजे के बाद नहीं जलती है। फिर पुलिस के द्वारा मिट्टी को जलाया गया, क्योंकि कंकाल बचा था, उसको रख नहीं सकते। तो सब लोग वहीं चले गए थे, मैं अकेले घर पे थी, क्योंकि वो रहते थे राष्ट्रपति भवन, हमारे यहाँ से दूर काफी है। तो बच्चों का आज एग्जाम है बेटे का, इसलिए मैं नहीं गई, पूरी फैमिली वहीं गई थी। तो रात में कुछ लोग आए हैं, अभी बाकी लोग वहाँ, हमारे हस्बैंड वहीं हैं, अभी आ जाएंगे।
हो सकता है अगर वो आ जाए तो फिर मैं बच्चे का ले करके स्कूल से हो सकता है शाम तक मैं भी जाऊं। इसलिए भाई नहीं मैं लाई भाई। अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, जो कि मैं घर पे थी कलवट में, बिल्कुल भी नहीं मन हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाई। सॉरी भाई। कौन इतना हंस रहा है दीदी? फोन छोटे के हाथ में है। मैं अभी खाना बना रहा हूँ दीदी। बना लो भाई, कुछ बना खा लो। क्लास लगा लो बेटा, बंद कर दो। शिवांशी क्लास लगा लो, टाइम हो गया है, 5 मिनट बाकी है। अभी तो 27 हो रहा है, 27 और साथ में लाइव भी देख रहा हूँ। नहीं, रोने वाली के हाथ में नहीं है भैया, रोने वाली रो रही है बैठ के। क्या करूं, परेशान हो जाती हूँ। छोटी ली है। मामा पूछ रहे हैं कैसी हो भांजी, बता दो शिवांशी। उसका काम ही है रोना। उसका काम है भैया ना कि वो गुस्से में जरा से भी उससे बात मत करो। उससे जब भी बात करो बस उससे प्यार से बात करो, जरा से भी गुस्से में उससे बात ना करो। कोई जरा से उससे गुस्से में बात कर दिया बस स्टार्ट हो जाती है। लाइक डन, थैंक यू पूनम दीदी, थैंक यू सो मच। पूनम दीदी सॉरी, मैं आपके लाइव में कल नहीं आ पाई दीदी, कुछ ऐसे रीजन थे जो मैं नहीं आ पाई। आपने मेरा सपोर्ट किया था बट मैंने नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी चाहूंगी हाथ जोड़ के आपसे। अगर आज टाइम मुझे मिला तो मैं आपका सपोर्ट कर दूंगी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मामा है, कम से कम इतना तो सीखो तो फिर। आठ 28 पर आई हूँ दीदी। कोई बात नहीं है दीदी। श्रेया इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आओ बेटा, देखो आ जाओ, आओ क्लास चालू होने वाली है ना, मैम क्या कहेंगे, आ जाओ। नाश्ता हो गया शिवांशी? बोलो शिवांशी, नाश्ता हुआ? मामा पूछ रहे हैं। ऑन हो दीदी। ओके दीदी। ये ऑटो स्टार्ट है। क्या करें भाई, बहुत परेशान हो जाते हैं इससे। जरा से कोई, इसके चाचा थोड़ा प्यार से खिला रहे थे, वो हाथ पीछे कर दिए, उसके लिए रो रही थी सुबह से। ये ऑटो स्टार्ट क्यों इतना स्टार्ट रहती हो? आ जाओ मेरे पास आओ, आओ देखो, आ जाओ, क्या हुआ? इतनी बड़ी बात को लेकर, हाँ इतनी बड़ी बात को लेकर, उसका मतलब हमको लो गोदी ले लो, ऐसे प्यार से खिलाओ, जरा सा इधर उधर मत करो।
छोटी है वो लड़ जाती है, वो अपना खेलती है चाहे जैसे भी। इतनी छोटी भी नहीं है भाई। 27 फरवरी को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भी परेशान करती है मुझे। मैं तो खाता ही नहीं 3-4 दिन तक। कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं देखा हूँ दीदी। क्यों भाई? आओ बेटा आओ। इतना बड़ा जुल्म करता तो सच में मैं नहीं खाता। कौन सा जुल्म भाई? मैं आ रहा हूँ दीदी। आओ भाई आओ, स्वागत है आपका। थोड़ी देर में। ओके भाई ओके, कोई बात नहीं है। पहले अपना खाना बनाओ, खाओ, फिर आराम से आना। श्रेया आ जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट होने वाली हो, देख लो टाइम हो गया। रोगी मैम क्या कहेंगे? क्यों मुझे कोई छू देगा? मतलब कोई छू देगा, आप 4 दिन खाना नहीं खाओगे? सच में कभी कभी बहुत गुस्सा आता है भाई इसके ऊपर। कितना भी प्यार से बुला लो, रोती रहेगी ना तो बहुत गुस्सा आता है, फिर मारने पीटने का मन करता है। शियांशी क्लास लगाओ बेटा, टाइम हो गया है ना। 33 हो रहा है। 33, 7 मिनट बाकी है। चौतीस हो गया। हाँ भाई 8:40 पे इसकी क्लास है। आ जाओ बेटा। इनकी ऑनलाइन है ना। यहाँ सारे स्कूल पे पहली क्लास से लेके पहली एलकेजी सब लेके 5वीं तक के क्लास से ऑनलाइन चल रही है। उसके ऊपर से क्लास जो है वो ऑफलाइन है। आ जा बाबू श्रेया। इसीलिए ना स्कूल में रहती है तो थोड़ा अच्छा रहता है, फ्री रहती है। घर पे रहती है तो ऐसे ही करती है। अच्छा बात क्या भाई, परेशान ज्यादा करते हैं। एक क्लास लगाएगी दूसरे में कहेगी अब मन नहीं हो रहा है। दिखा रही हूँ, आ जाओ।
गुड मॉर्निंग अंजू सिस्टर, वेलकम। आपका कैसे हो बहन? नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। दीदी संगीता दीदी मोस्ट वेलकम आपका हमारे लाइव में, थैंक यू सो मच। कैसी हो आप दीदी? और बताइए फैमिली में सभी लोग कैसे हैं? सब लोग गए हैं दीदी राष्ट्रपति भवन, क्योंकि हमारे बड़े पापा वहीं रहते थे। सिर्फ घर पे हम, हमारी देवरानी, हमारे बच्चे हैं। बच्चों का चल रहा है पेपर, इसलिए हम नहीं गए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम संगीता दीदी, हमारे भारतीय भाई की तरफ से है। पूनम दीदी थैंक यू सो मच। आप कैसी हो संगीता दीदी? हेलो भारती जय भीम, कैसे हो भाई? संगीता दीदी बोल रही हैं। सब चले गए हैं दीदी, हम ही बच्चे हैं। बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। लड़का जो बड़ा वाला उसका पेपर चल रहा है, इसलिए हम नहीं जा पाए। ठीक है, कर लो। सिरिया को भेजो, भेज रहे हैं। नहीं खीरी कर दे। ठीक है। आज सूरज किधर निकला था दीदी, जो संगीता दीदी जी लाइव में पधार चुकी हैं? नहीं भैया दीदी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले आती थी दीदी, बीच में नहीं आ रही हैं। सबके पास बच्चे हैं, सबके पास ये परिस्थिति है। जाओ बेटा, जो क्लास कर लो बाबू। मैं ठीक हूँ संगीता दीदी। आज मैं आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका खाना पीना हो गया संगीता दीदी? लो भाई, बच्चे स्कूल गए हैं और मैं काम करते करते ऐसे ही भाई बच्चों को सपोर्ट करती रहती हूँ भाई। सबके बच्चे दीदी सब इसी तरीके से परेशान हैं बच्चों को लेके, पढ़ाई लिखाई। पूजा किधर चली गई? हाँ संगीता दीदी, ये बात तो अपना बच्चे काम में सभी को देखते हुए भी सपोर्ट करती हैं। मम्मी मेरा नहीं हो रहा है। अरे यार इसे क्या है? सच बोलूं तो मुझे संगीता दीदी से डरता हूँ, क्योंकि मुझसे जहाँ पर कुछ गलती होता है तो तुरंत इंडिकेट करते हैं।
बिल्कुल भैया बिल्कुल, हम भी लोग संगीता दीदी को देख के मतलब काम करते हैं। हम बहुत ढेर दिनों से जाते हैं दीदी के लाइव में। बच्चों को सपोर्ट नहीं, बहन भाई बहनों को सपोर्ट। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, मैं समझती हूँ आपको, आपकी बात को समझ रही हूँ। कन्हैया कुमार, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, मोस्ट वेलकम आपका हमारे लाइव में। कैसे हो आप? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मम्मी कोई बात नहीं, कर लो। मैं बढ़िया हूँ। ओके भैया, बढ़िया ही रहना चाहिए। और बताइए परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? सब बढ़िया है। ओके भैया, थैंक यू। खाना पीना हुआ आपका? कुछ नाश्ता वगैरह? अपने बच्चों और फैमिली को देखते हो, आप सभी को सपोर्ट करने का काम करती हो संगीता दीदी, मैं यही बोलना चाहता था। कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ भैया। रुतबा तेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय, बिल्कुल राइट। ओके जी। ओके कन्हैया भैया, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं संगीता दीदी? संगीता दीदी तो कानपुर से हैं भैया, आप जानते हो, ये भी पूछ रहे हो। सो जा। और आप कहाँ से हैं कंचन लता दीदी? आवाज आ रही है इसकी? नहीं, अपने घर से हूँ भैया। मैं जानता तो पूछता क्यों, वही तो कह रही हूँ, अपने घर से हैं। आपके घर से हैं। आ गई क्या नीचे से? देखने यहाँ से बड़ी मम्मी आ गई क्या? मैं तो तेरे के घर से हूँ। मेरे छोटे भाई, थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है बच्चों को, मैं फिर कानपुरिया डांटती हूँ। फिर देखो बच्चे बोलते हैं कि क्या बोलती रहती वो मम्मा। सही बात है दीदी, बच्चे है ना, नहीं समझते हैं। वो भी किराए के घर में। हाँ दीदी, कोई बात नहीं है भाई, हौसला बुलंद रखो। आज किराया का है, कल अपना भी होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है भाई। समय समय का बस फेर होता, बाकी समय सबका आता है। मैं दूसरे के घर से हूँ दीदी, वो भी किराए के घर से।
ऐसी बात नहीं है भारती भाई। आप लोग का खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भैया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुछ नहीं हुआ भाई। मैं तो अकेले फंसी हूँ। बाकी सब लोग चले गए हैं। बच्चों का क्लास है, इसी सब वजह से मैं नहीं गई। खाने पीने का मन थोड़ी होता है भाई ये सब चीजों में। खाना पीना नहीं अच्छा लगता, पर क्या किया जाए। लो भाई ऐसे बिजी। भाई जब आते हैं तो बेजू भाई जब आते हैं तो तब वो भी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि दीदी आप खाना कहाँ से हैं। फिर देखो कितनी हंसी होती है। यही सब तो होता है दीदी, और क्या होता है। मतलब अपने भाई हैं जो। यदि नहीं हुआ है तो जल्दी से बना कर मेरे पास भेज दो। हाँ भाई, ये कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लो भाई, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? संगीता दीदी पूछ रही हैं भाई। कंचन सिस्टर, आप इतने टाइम क्यों सुला रहे हैं? आप बच्चे को सुला नहीं रही हूँ दीदी। वो रोती है। उसके चाचा ना उसको आए थोड़ा सा प्यार से खिला रहे थे, हाथ पीछे कर दिए। इसीलिए बहुत रोती है। क्लास चल रही है ऑनलाइन, छोटी वाली कर रही है, वो नहीं कर रही है। वैसे तो दोनों जुड़वा हैं, एक ही क्लास में है। यहाँ बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई है। एलकेजी से लेकर के 5वीं क्लास तक है। ये नहीं कर रही है, रो रही है तब से। वही चुप करा रही थी कि चुप हो जाओ बेटा। वो रोती है तो दीदी चुप नहीं होती, चाहे कितना भी प्यार कर लो। इतनी छोटी भी नहीं है। 27 फरवरी को 10 साल हो जाएंगे। फिर भी परेशान छोटे बच्चों से ज्यादा करती है। उससे उसका मतलब है हमको जरा सा कोई गुस्से से बात ना करे, बस हमेशा प्यार से गोदी में लेके खिलाए। अब इतनी छोटी तो है नहीं गोदी में लेके बैठूं। बहुत परेशान करती है दीदी। मेरे फैमिली में सभी लोग ठीक है दीदी, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारा करा है। किया थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
सिस्टर, आपके यहाँ सर्दी और कोहरे की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। क्या आपके यहाँ के डीएम अच्छे हैं? दीदी, कोहरा तो है ही है, पर यहाँ ना प्रदूषण वायरस बहुत ज्यादा फैला है। कोहरा के साथ साथ प्रदूषण दिल्ली में बहुत काफी हो गया है। इसकी वजह से यहाँ छोटे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस हो गई है। चाय तो आपके घर के देवता देंगे और मुझे, और आप नहीं देंगी चाय पीने के लिए। अगर आपको पानी डालना है भाई तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा। अंजू सिस्टर, नमो बुद्धाय, जय भीम। बड़ी दीदी संगीता दीदी जी की तरफ से है। मेरे से पूछो संगीता दीदी, सर्दी और कोहरा के बाद। सलाम। अरे भाई, बच्चे ऐसे कभी कभी बहुत परेशान करते हैं। बहुत करते हैं दीदी, बहुत ज्यादा। इतने छोटे भी नहीं मेरे बच्चे हैं, फिर भी यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। देवता देंगे भाई, मैं नहीं दूंगी आपको चाय। मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड और कोहरा इतना है कि कुछ दिखाई दे रहा है। चाय की जगह पानी दूंगी भाई आपको। लो भाई, अभी छोटी है, वह बड़े होने पर समझदार हो जाएगी। सही बात है दीदी, जब रोती नहीं है ना तो वो समझदारी दिखाती है। तब बोलेगी मम्मी आप थोड़ा कम काम किया करो, झाड़ू मैं लगा दूंगी। शाम को पानी आएगा, बोलेगी हम दोनों, भैया भर देगा हम रख देंगे। जब रोएगी ना तभी समझदारी नहीं आती उसको, बाकी समझदारी बहुत आती है। इधर भी से हम प्रॉब्लम भाई, कोहरा के कारण रास्ता भटक जाता है इंसान, इतना कोहरा है। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मत देना। ओके अंजू सिस्टर, आ रही हूँ। आप कितने टाइम लाइव आएंगी? दीदी, अंजू का लाइव हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया है पूजा दीदी? हाँ सिस्टर, देखा है न्यूज। न्यूज क्या दीदी, देखने के बाद ना दिल इतना दहल जाता है ना कि क्या करे ऐसे सिचुएशन में। पूरी फैमिली आ रही थी दीदी वहां से, लेकिन 5 लोग निकल गए थे। वो शरीर से बहुत भारी थे, एकदम लंबे चौड़े से थे ना, और आगे सबसे पहली वाली सीट पे बैठे थे। जो आगे राड होता ना, प्राइवेट बस थी ना एसी वाले, और राड जो एकदम मुड़ गई थी उनके पैर से, उसी में वो गए फंस। उनको बहुत निकालने की कोशिश किया गया, लेकिन लोग निकाल नहीं पाए। लास्ट में उन्होंने बोला आप लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ दो। लपट क्योंकि ज्यादा हो गई थी, कोहरस कुछ दिख नहीं रहा था। देख के बाद बसें आपस में भिड़ती जा रही थी। इतनी मुश्किल मैंने वीडियो देखा ना वहां की, वो तो जो मीडिया देखा वो छोड़ के, वैसी वीडियो जो देखा ना वो देखने लायक नहीं है दिल्ली। बहुत बुरी कंडीशन थी वहां की। थैंक यू पूनम दीदी, थैंक यू सो मच। मेरे यहाँ भाई सर्दी बहुत है भाई, पर आज कोहरा नहीं है। बाय बाय पूनम दीदी, बाय बाय भाई, मैं जा रही हूँ। ओके पूजा दीदी, मुझे खाना भी बनाना, भाई को ड्यूटी पर जाना है। ठीक है, जाने वाले को कौन रोकता है भला, जाने दो भारती भाई। आप लोग अपना ख्याल रखना दीदी और भाई। बिल्कुल दीदी, सेम टू यू, आप भी अपना ख्याल रखिए। मुझे तो कभी कभी बच्चों जब ज्यादा शैतानी करते हैं तो मुझे रोना आ जाता है, उसको समझाते समझाते। मुझे भी यही दिक्कत है, चिड़चिड़ा आता है दीदी, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है।
एकदम करेक्ट था आंसर ना? ओके। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है कि तुम कितने खाना बनाती है। मैंने नाश्ता कर रही हूँ, आ जाइए आप लोग। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझिए हम लोग कर लिए हैं। भाई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी बहन से पूछ लो। आप ही रोटी हो संगीता दीदी। क्यों भाई, रोना नहीं आता? बच्चे परेशान करते हैं तो क्या पेरेंट्स नहीं रो देते हैं? अंजू दीदी बताओ तो ये खाना सच में बनाती है? क्यों भाई, अंजू दीदी खाना क्यों नहीं बनाती हैं? ये भी झूठ है। अंजू सिस्टर आपकी लाइफ कैसे बंद हो गई? क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? संगीता दीदी पूछ रही हैं। मैं आज अपनी बहन से पूछा दूंगी। भाई टेंशन मत लो। सभी लोग खाने के बाद ही क्यों पूछती हैं? यूट्यूब की तरफ से वार्निंग आया था संगीता दीदी, बिल्कुल झूठ है। भारती भाई बता दीजिए दीदी को। वो भी सफेद झूठ बोल रही है पूजा। नहीं भाई, पहले पूछा है, अभी स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता करना। हाँ भाई, मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप सारा काम कर देते हो मुझे। भारती भैया आप तो अभी बना रहे थे, इतना जल्दी कैसे कर लिए? बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब की तरफ से वार्निंग स्ट्राइक आने के कारण लाइव बंद हो गया है अंजू का। ऐसा क्यों भैया? रीजन तो होगा कुछ, ऐसा क्यों हो जाता है? मुझे भी बताना। एज प्रॉब्लम के कारण? मतलब भाई समझी नहीं, एज की क्या प्रॉब्लम है? शायद लाइव में बच्चे आ गए होंगे। ओके भाई, बच्चे आ गए थे तो क्या लाइव में सामने अंजू सिस्टर के? भाई मुझे पता नहीं था। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं, मेरे तो बच्चे मेरे साथ कितनी बार आए हैं, पर ऐसा कभी तो नहीं हुआ। अभी आपके सामने भी थी। लाइव में अकेला बच्चों को नहीं आना चाहिए। हाँ ये बात है, अकेला नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम हैं तो बच्चों को अपने गोद में ले सकते हैं, अकेले बच्चों को नहीं आना अलाउ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय मूल निवासी, जय संविधान। रवि भैया जी कैसी हो दीदी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? स्वागत है आपका लाइव में।
कैसी हो दीदी आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ। मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि किस कारण से लाइव स्ट्रीम बंद हुआ है। एक तो पूरे दिन हाथ नहीं बंद रहता है काम करते करते, अगर कहीं कुछ दर्द भी हो रहा है वह भी बर्दाश्त करो, ऊपर से बच्चे कोई काम बिगाड़ देते हैं फिर बहुत गुस्सा आता। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही बात है। आपके पास मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा संगीता दीदी। भाई आप बोल रहे थे कि लाइव चालू हो जाएगा। आप कैसे हो रवि भैया बताना। थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, मैं भी ठीक हूँ। अकेले घर पे हूँ बच्चों के लेके, बाकी सब लोग तो चले गए हैं राष्ट्रपति भवन। मैं ही हूँ भाई, बच्चों का क्लास चल रहा है, बड़े वाले बेटे का पेपर चल रहा है इसलिए मैं नहीं गई, बाकी सब लोग वही हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ के आए, फिर इनका क्लास अटेंड हो रहा है, यहाँ बैठी हूँ। आप बोल रहे थे कि 1-2 दिन में हो जाएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। 10 दिन और लेट करती तो और जल्दी लाइव चालू हो जाता। आपको पता था भाई मैं बिजी थी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी दीदी संगीता दीदी। कंचन सिस्टर अपना ख्याल रखना थोड़ा, बहन अभी आप अकेले हो, बच्चों पर ध्यान देना, सब लोग आ जाएंगे घर पर तब अच्छा लगेगा, थोड़ा मन बदलेगा। दीदी अब देखो कब आते हैं, शाम तक आते हैं, कल आते हैं। अगर हस्बैंड आ जाएंगे तो शाम तक मैं भी फिर चली जाऊंगी। बेटे का पेपर है ना चल रहा है, कल भी है आज भी है उसका, और सुबह मैं ही छोड़ने जाती हूँ, हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ सारी जिम्मेवारियों में। आप टेंशन मत लो पूजा, मजा ले रहे हो भाई आप। चालू हो जाएगा, ठीक है भाई। लो भाई ऐसे नहीं बोलते हैं कि मजा ले रहे हैं। आप अपना काम पर ध्यान दो पूजा, आपके विश्वास पर टिकी हूँ भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ संगीता दीदी। लो भाई आपको डांट पड़ेगी बहुत तेज। मैं नहीं बोलता हूँ दीदी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल। मैं नहीं बोला हूँ दीदी, अंजू बोल रही है। आकाश यादव कहाँ से हो मैम? आप कहाँ से हो भैया? आप कहाँ से हो बोलो। मैं तो अपने घर से हूँ, आप बताओ आप कहाँ से हो? ओके, अच्छा अंजू सिस्टर ने बोला है।
सॉरी भाई, मैंने आपसे पूछा है, समझे? घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर मेरे घर है भैया। मतलब लाइव में यही पूछने आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? सबका घर ही पूछते हो सिर्फ? हाँ, ऐसे लाइव चलाओगे आप? मैं लाइव अच्छी चला रही हूँ, आपका तरीका सही नहीं है पूछने का। सबसे पहले किसी के लाइव में एंट्री करते हैं तो सिर्फ यही पूछते हैं क्या, कहाँ है तुम्हारा घर? हमें को सिखा रहे हो? जी, तभी मैं सोचा कि मेरे छोटे भाई लव को ऐसे बात करते नहीं, फिर ऐसे कैसे बोल दिया जी। अब मैंने देखा कि अंजू सिस्टर ने बोला है। अपना तरीका नहीं देखते हैं भाई लोग। भाई आज क्या बनाए थे खाने में? लो भाई और कंचन सिस्टर, अंजू सिस्टर, अब मैं चलती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बड़ी दीदी, थैंक यू सो मच, आप हमारे लाइव में आई, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत कीमती समय अपना निकाल के हमारे लाइव में इतना टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय आपको। संगीता दीदी प्लीज बताने का कष्ट कीजिए, लो भाई कौन है? मैं कान पकड़कर भगा दिया हूँ लाइव से उसको दीदी। बिल्कुल भैया, मैंने देखा, मैं भी भगा ही देती पर उसको देख रही थी लिख क्या रहा है। अपना ख्याल रखना संगीता दीदी। इनको चिढ़ होती है भाई, अगर ये लोग देख लेते हैं ना हमारे बाबा साहब की कहीं फोटो पिक्चर या कुछ, इनकी मानसिकता ऐसे होती, सिर्फ पूछने आते हैं कहाँ से हो। दीदी अभी मत जाओ, 5 मिनट और रुको प्लीज। मजाक मत करो पूजा, संगीता दीदी के पास बहुत सारे काम होता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। जय भीम गोविंद भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? भाई मुझे नहीं पता था। ठीक है दीदी, आप जाइए। अंजू सिस्टर, लव भारती भाई नाम से सबसे पहले मेरे भीम अरविंद भाई नाम से जो हैं आते थे मेरी लाइव में, तब से मैं लव भाई को लव भाई ही बोलती हूँ, चाहे लव भाई किसी भी आईडी से आए। बिल्कुल राइट दीदी, बिल्कुल। मैं भी लव भारती को, लव भाई को यही बोलती हूँ। मैं तो पहले भैया बोलती थी तो ये मेरे लाइव से गुस्सा होके चले गए थे। आप मुझे भैया मत बोलो, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तब से भाई बोलती हूँ, लव भाई। मैं तो भारती भाई को जानती हूँ, लव भाई को नहीं जानती हूँ दीदी। लगा लो। पूरा फैमिली को देखभाल संगीता दीदी ही करती हैं और जीजा जी फौजी हैं जो अपने अपने पूरा भारतवासियों को सेवा करते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जानते हैं, हम भी दीदी को काफी दिनों से जानते हैं।
बीच में जब मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था तो मैं नहीं जा पाती थी। मैं दीदी की लाइव में रोज जाती थी। दीदी से पूछो, चाहे 10 मिनट 5 मिनट के लिए जरूर जाती थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ संगीता दीदी, आप सही बोल रहे हो। मैं कभी-कभी संगीता दीदी को दूसरी आरडी से जाकर परेशान करता हूँ और फिर मैं अपना नाम बता देता हूँ। अच्छा लगता है भारती भाई, बट कोई छल करे तो नहीं अच्छा लगता है। अगर कोई बता दे तो अच्छा लगता है। चलो नहीं, कम से कम भाई जो है छुपाए नहीं हमसे। एक विश्वास होता है भाइयों पे, और हंसी मस्ती किसी को ये तो चलो ठीक है। बट हमारे कितने भाई हैं ना जिनसे हमारी पहचान होती है असली आरडी से, कभी दूसरी आरडी से आके वो खुद गलत बोलते हैं। जब पता चलता है तो हर्ट होता है कि नहीं, ये सब ऐसा क्यों करते हैं। मैं कमेंट नहीं करूंगी, चुपचाप देखूंगी। मैं काम भी कर रही हूँ भाई। ओके सिस्टर, ओके। मैं छल कभी नहीं करता हूँ किसी के साथ। बिल्कुल भारती भाई, यही अच्छा लगता है। मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा ये लगा आपका कि आपके पास भी है आरडी, लेकिन आपने कभी ये नहीं छुपाया कि नहीं ये मेरी आरडी नहीं है। आपने बता दिया, ये सबसे अच्छा लगता है। एक विश्वास हो गया। मैं मजाक करता हूँ, अश्लीलता नहीं फैलाता हूँ मजाक के नाम पर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, थैंक यू भाई। मैं जानती हूँ आपको भारती भाई, मुझे उसी दिन विश्वास हो गया। जाओ बैठ, 10 मिनट जाओ ना। हाँ। यही आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी ये नहीं आपने कहा कि नहीं ये मेरी आरडी नहीं है। बिल्कुल कंचन सिस्टर और लव भाई हमेशा आते हैं हमारे लाइव में। वही तो कह रही हूँ दीदी, मतलब चाहे कितनी भी आरडी चेंज कर लो या कुछ, लेकिन ये बताते हैं कि नहीं दीदी मैं हूँ। बहुत भाई, मैं मेरे लाइफ में ऐसे हुआ है दीदी, तब मैं जानती हूँ मेरे कितने भाई जो अपने समाज के हैं ना। चलो बहन, मैं चलती हूँ। ओके दीदी, बिल्कुल आप जाइए। मैं समझ सकती हूँ आप बिजी हो। मैं भी अभी थोड़ी सी फ्री हूँ, बच्चों की क्लास खत्म है। फैमिली में सब रहते तो कहाँ फ्री रह पाती। अच्छा नहीं लग रहा अकेले भोर में बैठे, इसलिए मैं लाइव चला लिया। कितने भाई हमारे समाज के हैं ना, ये दूसरी आरडी से आएंगे जिससे हमारी उनकी पहचान होती, फिर आरडी चेंज करके ऐसे आएंगे ना हमको पता नहीं चलेगा। फिर अपनी लैंग्वेज ही बदल लेंगे बात करने का। जब बाद में हमें पता चलता है ना किसी के द्वारा कि इन्हीं की आरडी है, तो हमें हर्ट होता है कि नहीं इनकी कैसी सोच है, बताओ। मैं सभी आरडी का अपना कोडिंग रखा हूँ कि बहनों के पहचानने में आसानी हो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भारती भाई, आपकी बात बिल्कुल राइट है। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जोहार। सेम टू यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोडिंग वर्ड लास्ट में 563 है। थैंक यू संगीता दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना संगीता दीदी। लो भाई, अब मुझे आपका कोडिंग शब्द पता चल चुका है। अब चाहे जिस आईडी से आए। थैंक्स आ लॉट भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपने इतना कीमती समय आज हमको दिया है। मेरा कोडिंग से कोई दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है दीदी। ऐसी बात नहीं है भाई, फिर भी उसकी लिखावट हर एक चीजों से हम समझ सकते हैं कि हमारा भाई है कि कोई और है। 9:20 पर तो क्लास है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हूँ। अरे यार, बेशक भाई, फिर भी हम समझ जाएंगे कि हमारा भाई है कि कोई और है। ऐसी नहीं है कि आईडी से पहचानेंगे।
मेरा व्यवहार ही मेरा असली पहचान है। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। सिर में बहुत दर्द हो रहा आज फिर भारती भाई, क्या करूं। बिल्कुल भाई बिल्कुल राइट, बिल्कुल 100%। बिल्कुल, जो आपके संस्कार है ना वो कहीं भी रहो दर्शा देंगे आपको, आप ही हो कि कोई और है। भाई मैं मजाक कर रही थी, दिल पर मत लेना। नहीं पूजा सिस्टर, मेरे भाई दिल पे नहीं लेते हैं कोई बात। बहुत अच्छे भारती भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। कल कोई मेरा नकली बनकर आप लोग का परेशान करेगा तो मुझ पर डाउट जरूर करेगा, भले मुझे बताएंगी नहीं। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है भारती भाई। आपका आरडी का नकल कर सकता है, पर आपकी जो नेचर है, आपके व्यवहार, आपके विचार, आपकी बातों का करने का तरीका, वो सब चीजें नहीं नकल कर पाएगा इंसान। कुछ तो नजर जरूर आएगा हमको। मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा आपसे पूजा। मैं बहुत शब्दों पर ध्यान देकर कमेंट करता हूँ लाइव में। मुझे पता है भाई, ये सब चीजें तो हम लोग भी समझते हैं। नहीं इतना तो हमको भी अनुमान हो गया कौन हमारे अपने हैं कौन पराये हैं, कौन अपना है हमारा कौन दिखावा करता है। इसलिए मैं टाइपिंग करके कमेंट करता हूँ ताकि गलती होने का चांस कम हो। भाई मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं काम कर रही हूँ। काम कर लो पूजा बहन, कोई बात नहीं है। मेरा हाथ बिजी है। दीदी आप खाने पीने से लेकर दवा खाने से में भी लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा। दवा खाने में नहीं भाई, आपको पता है हम कोई बात सोचते हैं ना तो हमारे माइंड से प्रॉब्लम होती है, आपको पता है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसीलिए हस्बैंड मुझको नहीं ले गए हैं कि तुम मत जाओ। नहीं तो मेरी छोटी देवरानी थी, मैं जा सकती थी, लेकिन इसीलिए मुझको नहीं ले गए वो। काम बिजी हो नहीं है पूजा, आप समय से खाना नहीं खा रही हो दीदी।
कल भाई आपको पता, वैसे भी नहीं, आग नहीं जलानी थी। ऐसे में लोग बोलते हैं ना कि नहीं, खाना नहीं बना खा सकते हैं, तो रात में कुछ बना नहीं। हम लोगों को 11 बजे पता चल गया था। खाना तो बन गया था पर वो गले से उतरा नहीं, किसी ने नहीं खाया। फिर भागा दौड़ी में सब लोग जाने लगे, फिर उधर चले गए। मेरी लाइव उस टाइम चल रही थी जिस टाइम फोन आया, फिर इसके बाद मैंने बंद कर दिया। सुबह तब से कहाँ खाना कोई खाया। मैं सुबह उठी हूँ, चाय बनाई हूँ, पराठे बनाई हूँ और सब्जी बनाई। बेटे को स्कूल छुड़वाया किसी और से, आज मैं नहीं ले गई थी छोड़ने। खाना सच में भाई कल से कोई नहीं खाया। मुझे पता है दीदी, इसलिए उस मुद्दा से भटकाने के लिए मैं मजाक भी कर रहा था। दीदी मेरी बातों को मजाक नहीं समझना। नहीं भाई, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों। आप लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं, मुझे पता है। मैं ना क्या भारती भाई, उस वीडियो को देख लिया था थोड़ी सा। मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे हाथ से फोन भी छीन लिया। तू मत देख। वही चीज मेरे माइंड में ना, बार बार वही चीज। मेरी जो सोचने की क्षमता ना, वो बहुत काफी है, इसलिए मेरे सिर में दर्द होता है। मैं समझ सकता हूँ जब कोई घटना होता है तो फैमिली में कैसा हाल होता है। आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो गया है दीदी, इसलिए आप किसी बात को बहुत गहराई तक सोचती हो और आपको लगता है कि मेरा सोचने की क्षमता ज्यादा है। पता नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज होती है वो मेरे माइंड में बार बार वही चीजें आती है। बार बार वही चीज आती है भाई, सच्ची। मैं भुलवाने की कोशिश कर दो तो भी वही चीजें बार बार माइंड में आती हैं। मैं कल इंतजार कर रही थी दीदी आपका लाइव का। क्या करूं बहन, मैं कल बहुत परेशान थी। आज भी नहीं लाइव आती, घर में लोग होते नहीं तो नहीं आते। बस मैं, बच्चे मेरे, मेरी एक दीवानी है बेचारी वो भी। बड़ी मम्मी आ गई है लग रहा, नीचे ना बेटा श्रेया आ गई ना, आवाज आ रही है तब कर रही हूँ। दीदी आपके लाइव में मैं इतना समय देता इसके कारण मेरे से कुछ लोग नाराज भी रह रहा है। कौन नाराज है भाई?
सोने दो बेटा, कर लो, तुम ही कर लो, नहीं करेगी फिर काम करके दे देना नोटबुक इसको। मैं भेजती हूँ। ज्यादा मत सोचा करो दीदी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहीं पर ज्यादा समय दूंगी। कौन नाराज है भारती भाई? ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं भी ज्यादा समय देती हूँ दीदी। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल, आप लोग तो हो जो हमेशा साथ रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई आज क्या बना था खाने में बोलो? मम्मी 32 हो गए लेकिन ये ज्वाइन नहीं हो रही। 30 पे थी। मेरे पास दो, मैं कर देती हूँ। मैं आज सब्जी चावल बनाया हूँ। अच्छा भाई, सॉरी भाई, मैं इनका लाइव स्टार्ट कर रही थी, हो नहीं रहा था। कोड पासवर्ड मांग रहा था, वो वही डायल नहीं कर पा रही थी, तो अभी किया उसका क्लास। दाल मेरा खत्म हो गया है पूजा बहन। ठंडी में सब्जी वेस्ट होता है भाई। मैं कॉलेज से घर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं दाल नहीं खरीदा। हाँ होता है दीदी, प्लीज मेरा बातों पर ध्यान दो। दीदी आप 2 मिनट तक सांसें को जोर से लो और कुछ देर रोकने के बाद सांसों को छोड़ो। सांसें तो मेरी फूलने लगती है भाई, कैसे रोकूं? हाँ यही मेरा बात है, कोशिश करना।
बहुत राहत मिलता है दीदी इस तरह से करने से। ओके भैया, कोशिश करूंगी मैं। सुबह शाम ऐसा करेंगी तो आपका 50% समस्या का समाधान हो जाएगा दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोशिश पूरी करूंगी। भाई मेरे लिए भी बनाया हो कि खाना नहीं। दीदी जी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है रवि भैया, तबीयत क्या बताएं भैया, ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो? रवि भैया आप कैसे हो, आप बताओ। सभी के लिए मैं बनाया हूँ पूजा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मैं भी ठीक ही हूँ दीदी जी। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए रवि भैया। मैं सारा खाना खा जाऊंगी भाई, पूजा सिस्टर बोल रही हैं। मेरा यहाँ आज बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है दीदी। ठंड है भाई, ठंड है, कोहरा इतना है, कोहरा की वजह से इतनी घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में तो वायरस से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला है। बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है दीदी। दीदी आप अपना ध्यान रखो। ध्यान रख रहे हैं रवि भैया, ध्यान ही रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल से अकेले हैं घर पे, सब लोग चले गए हैं। हम हैं बस। बच्चों का पेपर था इसलिए हम नहीं गए। लड़कियों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। सब लोग, पूरी फैमिली चली गई, हम और हमारी छोटी दीरानी घर में थे। यहाँ से दूर है ना भैया राष्ट्रपति भवन, जहाँ हम रहते हैं यहाँ से दूर है। अभी वो राष्ट्रपति भवन में ही जॉब करते थे, रिटायरमेंट नहीं हुए थे, इसलिए पूरी फैमिली वहीं रहती थी। उनके पोते का गौना था, गांव गए थे। सब दुल्हन भी लेके आ रहे थे, साथ में सब लोग थे, 7 लोग थे, आ रहे थे। अभी मैं बेड पर सोया और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम में व्यस्त रहा करो, जिससे आपका स्ट्रेस कम रहा करे। कहाँ व्यस्त रहूं भाई, अच्छा नहीं लग रहा सच में रवि भैया, इसलिए मैं लाइव आ गई ना। अकेले थी, मेरे माइंड में बहुत ज्यादा, सिर में इतनी दर्द हो रहा है ना, तो मैं क्या ही बताऊं। पर मैं सबको, आप सबके बीच में थोड़ा सा ना उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। और हम लोग भी तो आपके साथ ही हैं दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो बात है। सच्ची दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ हो। जाके नहा लो भाई, ठंड नहीं लगेगा। पहला बेटा जीवन में वही का वही था। उसका तिजोरी में रखा धन फिर से धन्यवाद। किसका करने जाए भाई, आप ही लोगों ना, किसका करने जाए बताओ। हाँ दीदी, बट आप ज्यादा सोचना ना करो। नहीं रवि भैया, ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, बट मैंने जो कल वीडियो देखा था ना, वो तो मीडिया का छोड़ के जो पर्सनल वीडियो थी ना, उसको जब से मैंने देखा ना, वो चीजें मेरे माइंड में, मैं लाइफ पे रोना नहीं चाह रही हूँ भाई।
क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं ना, तो गलत कमेंट करते हैं, रोती रहती है। वो चीजें कोई भी देख लेगा ना, उस वीडियो को देख नहीं पाएगा रवि भैया, सच्ची में बता रही हूँ। जैसी सिचुएशन थी, जैसी शोर शराबा चिल्लाहट रोना हर एक चीज, वो कोई नहीं देख पाएगा। मैं थोड़ी सी देखी फोन, हस्बैंड ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया, तुम मत देख, इसीलिए मुझको ले भी नहीं गए हो। तू जाएगी ज्यादा परेशान हो जाएगी, मत जा। हाँ दीदी, बट आप ज्यादा सोचना ना करो, यह बात तो सत्य है दीदी, बहुत लोग जलते हैं हम लोग को देखकर। ऐसे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं भाई, मैं सुबह सुबह दवाई खाई हूँ, मैं बिना दवाई को नहीं चलती हूँ भैया, पता ना आप लोगों को। मेरी दवाई हो तो अभी चलती है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए आ गई हूँ। जय भीम भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भारती भाई जलते हैं दीदी, कोई किसी से नहीं जलेगा बहन, क्यों जलेगा कोई। हाँ जी दीदी, बिल्कुल भैया, थैंक यू। जलने वालों थोड़ा और जलो, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। जलने दो, तभी तो जलने वालों की रोशनी से हम लोग को ठंड से राहत मिलेगा। ऐसा नहीं है भारती भाई, जिंदगी के इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कभी किसी से बैर नहीं, कभी किसी से जलना नहीं चाहिए, जब तक इंसान कोई हमें घातक कोई ऐसी चीज हमारे साथ ना करे ना, क्यों जले भाई किसी से कोई। जिंदगी बस कब आखिरी, इसको कोई नहीं जानता भैया। जब तक रहो सब लोग एक साथ, एक दूसरे को समझो, बस क्या है ये इंसानियत, बाकी कुछ है नहीं भाई। ये किसी ने नहीं देखा है ना समझा है। हम तो कब तक रहना है, कब जाना है। दीदी, लोगों की सोच को आप बदल नहीं सकते ना, ये लोगों की भावनाओं को बदल सकते हैं। तो आप ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें, लोग यहाँ पर हैं सामने लेकर जवाब देने की कोशिश रखते हैं। राइट भैया, सही बात है, अपना ही अकल लगा लिया करो, मेरा नकल कब तक साथ देगा पूजा। किसके लिए क्लैपिंग हो रही है? तुम्हारे लिए? क्या करी हूँ? हैं? कौन सा आंसर बताई हूँ? तो क्लैपिंग हो रही है, आंसर बता दिया तो। पहले मैं डायलॉग मारी थी भाई, फिर आप मारे थे। आप जलने की बात बोले हो। क्लिपिंग क्या होता है दीदी? क्लैपिंग भाई, क्लिपिंग नहीं, क्लैपिंग करवा रही है मैम ने। क्वेश्चन करी है तो शिवांशी ने आंसर बता दिया, तो उसी के लिए क्लैपिंग करवा रही है। कोई किसी से जलता नहीं दीदी, बस उसकी सोच और बुद्धि हो जाती है, उसको बोलते निगेटिविटी हो जाती है उसके अंदर। जलना क्यों भाई रवि भैया, कोई किसी से क्यों जलना। आज तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है दीदी। ठंड है भैया, ठंड ज्यादा है, यहाँ 5-6 दिन से ठंड बढ़ गई है।
दीदी भारती भाई को समझा दो। क्या समझाऊं बहन, बोलो। हर व्यक्ति के अंदर लाइफ में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसी उतार चढ़ाव का ग्रस्त में हूँ इस समय 10 दिनों से। क्या हुआ है भैया, रवि भैया बताना। जिंदगी है भैया, जिंदगी सबकी जिंदगी में आते हैं भैया, एक ही इंसान के नहीं। इंसान एक दूसरे को यही देख के थोड़ा अपने मन में हौसला रखता है कि नहीं सबके साथ होता है। हुआ क्या भैया, रवि भैया बताना। मुझे देख के जल रहे हैं। नहीं दीदी, भारती भाई क्यों आपको देख के जलेंगे, ऐसा नहीं है। आप भाई बहनों में हंसी मजाक चलता है। क्या हुआ है रवि भैया बताना एक बार। जलने वाले खुद को नुकसान करता है, इसलिए मेरा सब्जेक्ट में ये सब चीज ही नहीं है। चलिए जब आया अपने घर, उसने यकीन से बोया खेतों में फैला कुछ ही दिन में सबके सब पौधे बनते। दीदी आप ज्यादा सोच नहीं, समय आप ज्यादा सोचने की कोशिश मत कर लिया कि तबीयत खराब हो सकती है। क्या ही बताऊं रवि भैया, सब लोग नहीं समझेंगे ना उस चीज को। मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ आप लोगों के सामने, समझे। ऐसी सिचुएशन में इंसान का एक ना क्या होता है, इस तरीके से बात बैठकर करना आसान नहीं है। मैं कैसे अपने दिल को कैसे समझा कि मैं आप लोगों के बीच बात कर रही हूँ। सिर में दर्द हो रहा है इसलिए भैया। इतना आसान नहीं है रवि भैया, बट क्या करूं, आप लोगों के साथ में बैठ के थोड़े से समय काट रहे हैं। मैं अपने मन में ये सोच रही हूँ काश मैं भी गई होती, थोड़ा देख ली होती, मैं भी गई होती, थोड़ा देख ली होती। जलन मेरा सब्जेक्ट से काफी दूर है, जो कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, कभी पहुंच नहीं सकते। सर से हाथ हटाओ दीदी जी। भैया मेरे ना सिर में ही दर्द होता है, ऐसे दर्द होते होते ये नसें जो देख रहे हो ना ये सूज जाएगी अभी। ये शुरू हो रही है हल्की हल्की, यहीं से दिक्कत होती है काफी। यही तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। मैं जरा से रो दूं या कुछ सोच लूं, मेरे सिर में ही काफी दर्द होता है भैया, इसी से परेशान हूँ। और मुझे वहां तक पहुंचने में मुझे हर किसी के नजरों में गिरना पड़ेगा। मैं कभी भी, मेरे से ऐसा नहीं होगा। आपके कौन सी साइड सर दर्द करता है दीदी? मेरे ना भाई दोनों साइड देखना, यहाँ ना अभी हल्की हल्की नसें ना ये एकदम मोटी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। यहाँ पे भी मेरे, अब तो पहले नहीं पता चलता था, अब बाहर से भी पता चलता है। यहाँ पे भी गांठ है, यहाँ पे भी है। यहाँ ये जब वो हुआ था सीटी स्कैन, उसमें पूरा है। मेरे 2 हुए हैं, अभी तीसरा होने को बाकी है। यहाँ की नसें ऐसे हाथ रखो ना तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे से ज्यादा करती है जब दर्द होता है तब।
दीदी आप पानी ज्यादा पिया करो। पानी पीती हूँ सिस्टर, ऐसा नहीं है पानी नहीं पीती हूँ, प्रॉब्लम हो गई है तब क्या ही बताएं अब। ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। जब आप ये जानती हो कि मेरा समस्या इस कारण से होता है तो आप क्यों समस्या को मोल लेती हो? मोल कोई नहीं लेता भारती भाई, आप ही बताओ। मोल कोई नहीं लेता है। हम एक सामने वालों को देखने से हम कुछ अलग ही अंदाजा लगाते हैं, पर जिसके ऊपर बीतती है ना वो कुछ अलग ही होता है भारती बहन। कोई नहीं सोचता है कि हम कोई चीज मोल लें। अब जो चीज घर में है फैमिली के साथ आप उसको बांटोगे, चाहे जैसे दुख रहेगा तो भी उसके साथ बांटोगे, सुख रहेगा तो भी। ये नहीं सोचोगे कि इससे हमें प्रॉब्लम होगी तो ये चीज हम ना करें इनके साथ। करना पड़ता है मिलके भैया, तो उस चीज को आप समझ सकते हो। मेरे अब साल भर के अंदर मैं कितनी परिस्थितियों में घिरी हूँ, तो अब मैं कैसे उस चीज से बाहर निकल सकती हूँ, आप मुझे बताना जरा। दीदी मैं आज से आपसे आज बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो भैया, बिल्कुल कर सकते हो रवि भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ, टाइम हो तो बताइएगा। करेंगे भैया आपसे बात, हो सकती है 12 साढ़े 12 बजे तक अभी बच्चों का क्लास चलेगा, उसके बाद फ्री रहूंगी। भाई मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके सिस्टर ओके, 12 बजे के बाद कर सकता हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल कर सकते हो। जिंदगी से बढ़कर है क्या ये सब चीज? मैं समझ सकता हूँ कि ये सब जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जिंदगी से बड़ी नहीं। बात आपकी सही है भारती भाई, लेकिन ना मैं यही चीज मैं भी सोचती हूँ। मेरे माइंड में वही चीज क्यों मैं इससे बाहर नहीं निकल पाती हूँ भाई, सच्ची। एक कोई भी हुआ, अगर मैं उस चीज को बाहर कर दूं तो फिर रिश्ते का मतलब क्या होगा? सब लोग पता नहीं कैसे समय के हिसाब से भूल जाते हैं, बदल जाता है, बट मेरे से नहीं बदलता भारती भाई। जिसको मैं अपना समझती हूँ तो दिल से समझती हूँ, इसका मतलब नहीं कोई भी रिश्ते का ही मतलब है कि नहीं वो नहीं है अब, तब उसका महत्व यहीं से खत्म हो गया। फिर अपना स्वास्थ्य अपनी जिंदगी नहीं दिखती है भाई। जो मैं अपनी जिंदगियों में इतनी छोटी सी जिंदगियों में देखी हूँ ना, साल भर से जो देख रही हूँ, बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, शायद शायद हुआ होगा भाई। मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि ऐसा दिन किसी के साथ आए भी ना, जितना मैं देख रही हूँ। मेरा शब्द थोड़ा कठोर हो सकता है दीदी, पर मैं समझ रही हूँ भाई, आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं आपकी बात भारती भाई सबकी बात समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती हूँ, पर इससे सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाती कितनी भी कोशिश करूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आती हूँ। कोई मेरा रीजन नहीं है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच टाइम पास कर लेती हूँ, थोड़ा सा हंस बोल लेती हूँ, यही मेरी जिंदगी की जो हंसी होती है। जो कुछ भी होता अकेले होती हूँ जब ना, तो फिर कुछ नहीं होता है भाई। दीदी लोगों की सोच में फर्क होती है, उन्हें इतना फेस नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। आप जितना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल को फेस करने उतनी तो हम लोगों की उम्र भी होनी होगी, इसलिए लोगों को मजाक दिखता है। एक बार मेरे साथ भी एक मुसीबत आया था। कोई किसी से मजाक नहीं कर रहा है।
कुछ बोलने से पहले अपने शब्दों पर भी ध्यान दिया कीजिए। बोलो भारती भाई, बोलो आप क्या कह रहे हो? कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या ये सही है गलत? नहीं, आप सही कह रहे हो भारती भाई, गलत नहीं है। देखो, इंसान अपने सामने वालों को हमेशा समझाता है। वो मैं आपकी बात को समझ रही हूँ कि हमेशा सोचता नहीं। इंसान कोई किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, ये मुझे पता है। जो अपने होते हैं वो कभी नहीं देखना पसंद करते हैं, उनको भी दुख होता है। कौन मजाक कर रहा है? कोई नहीं भाई, आप बोलो, मजाक कोई नहीं कर रहा। मैं समझ रही हूँ, आप लोग बहुत कोशिश करते हो कि मैं खुश रहूं। एक दूसरे के लोग समझाते हैं, और क्या। कोई कितना मुश्किल में होता है लेकिन समझाता है एक दूसरे को, नहीं कि ये सिचुएशन से बाहर आए। लेकिन एक चीज होती है भारती भाई, वो ना सही बात है कि जिसके ऊपर एक होता है उससे और जो सामने वाले में बहुत फर्क हो जाता है। पर उस चीज को आप समझते हो, ये भी समझाने की कोशिश करते हो, मुझे अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है। जब लोगों को एक मजबूती देनी चाहिए वहां पर लोग मजाक की बातें करने लगते हैं। और मैं शब्द कहने से पहले बहुत ज्यादा समझ और सोचता हूँ, तब मैं वह शब्द बोलता हूँ। मैं भी ये भी समझता हूँ कि आपकी फैमिली में कोई किसी के साथ घटना हो और एक फैमिली में हो, दोनों में फर्क दिख जाता है। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा। मैं समझ रही हूँ भारती भाई, मैं आपकी भावना को, बात को समझती हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं पत्थर नहीं हूँ जो मैं ये सब चीजों से अवगत नहीं हूँ। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आप लोग पूरी कोशिश करते हो, मैं समझती हूँ। तभी तो कोई बात होती है आप लोगों से शेयर कर देती हूँ लाइव में। ऐसी बात नहीं है। मैं दीदी से पहले ही बोल दिया हूँ ये सब बातें। दीदी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। मैं 2 साल पहले हमारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि मैं 1 मंथ में प्रॉब्लम फेस कर रहा था। और छोटी मोटी प्रॉब्लम थी भी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वहां पर लोगों को हमने होता है भैया, रवि भैया। मैं भी इस सब चीजों से टूट चुकी हूँ साल भर से। मैं समझती हूँ, मैं किसी का दर्द देखती हूँ मैं अपने आप पे ले जाती हूँ। लेकिन दीदी को प्रॉब्लम भी जानता हूँ और समस्या को भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, आप सभी लोग हो। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि दोनों को बैलेंस में रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों की। आप सभी भाई नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस चीजों को। वहां पर लोगों को साथ देने से ज्यादा लोग मजाक उड़ाना पसंद करते हैं और साथ में बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा घूमना नहीं चाहता हूँ। नहीं, मेरी दीदी को प्रॉब्लम है।
इसका जवाब मैं बहुत अच्छे से देना चाहते हैं, आप दे सकते हो, क्योंकि सामने मेरी दीदी बैठी है जिसको प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। इसलिए किसी को ऐसा शब्दों से उच्चारण नहीं किए कि अपना श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में दूसरों को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जवाब हर कोई देना चाहता है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। सॉरी, कृपया हमें कोई शब्द लिखने और समझने की बात मत करें। मैं अपने अंदर में इतना निपुण हूँ कि मैं हर वह शब्द को कहाँ कहाँ और कब और कैसे किए किस लिए लिख रहा हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। किसी न किसी मजबूरी के चक्कर में नहीं दे पाता। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया कैसे हो? स्वागत है आपका लाइव में। मैं बढ़िया हूँ भैया। सोनू भैया आप बताओ, आप कैसे हो? आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। ठीक है। मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा बड़ी खींचना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं किसी को ऊपर कभी टिप्पणी किया हूँ। बस लोगों को सच में फ़र्क है कि मेरे ऊपर वह टिप्पणी किया, बस मैं उसको सच कहना दिखाता हूँ। अभी तो सो के उठा हूँ। क्यों सोनू भैया अभी सो के उठे हो? अभी सो के क्यों उठे हो? ड्यूटी नहीं जानी है आज? बच्चे स्कूल नहीं गए क्या? गए। अच्छा भैया, नाश्ता वास्ता हुआ कुछ? क्या हुआ? जाओ म्यूट करके जाओ वहाँ से, आवाज़ थोड़ा स्लो कर दो। छिपकली रोने वाली। छिपकली क्लास कर रही है भैया, रोने वाली रो रही है। सुबह से एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है। दूसरा क्लास चल रहा है, अभी लेटी अपना मस्ती में। अब तक रो रही थी, अब कंबल वंबल ओढ़ के लेटी है। एक भी क्लास नहीं करी है। परेशान करती है सोनू भैया, क्या करें। कोई कहे कि मैं निपुण हूँ तो समझ लेना कि आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, और जिसके अंदर अहंकार भरा हो, कोई
को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी अहंकार के कारण खुद को विलुप्त करते जाता है। अहंकार नहीं पालना चाहिए भैया, किसी से किसी के क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया जी। मैं तो समझता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं गलतियों से सीखता हूँ प्रतिदिन। जय भीम भारती भाई। देखो मैं अभी तक खुला बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। बताइए क्या दिक्कत है आपको, किस प्रकार की दिक्कत है। जय भीम रवि भैया जी। प्लीज़ भैया, मैं दोनों भैया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग आपस में क्यों ऐसा कर रहे हो। जाने दो, एक दूसरे को ऐसा क्यों करते हो। जय भीम रवि भैया जी, सोनू भैया जी, जय भीम रवि भैया भी बोल रहे हैं। मजाक के बात आप किसको बोल रहे हैं। मैं यहाँ लाइव में आकर मजाक उड़ाता हूँ। क्यों आपका नाम लेकर हमने बोला मजाक की बात आपको क्यों मेरे से लग गई। आपने किसी को बोला कि जल रहे हैं।
जय भीम सीमा जी, कैसे हैं आप? और बताओ दीदी जी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, आप बताओ। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया जी। पहले किसी की भी लाइफ में एक दूसरे पर टिप्पणी करना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक नहीं है। क्या हुआ आपको सीमा जी? रवि भैया आप चले गए क्या? पहले ये बताओ। रवि भैया अगर आप हो तो कमेंट करो प्लीज। क्या हुआ आपको सीमा जी? सीमा सिस्टर क्या हुआ बताओ। प्लीज कमेंट करो। रवि भैया हो चाहे भारती भाई, आप दोनों लोगों में से। सोनू भैया, मैंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं किया तो सोनू भैया डीजे। मैं तो आकर दीदी से पूछ लो। मैं तो आकर दीदी का हाल चाल लेकर जाने वाला था, लोग हम पर ही बोलने लगे। घर में बहुत झगड़ा हुआ है। किससे हुआ है सीमा बहन? रवि भैया मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी भाई होने के नाते। अगर मेरी बात को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर मैं क्या ही बोल पाऊंगी आप लोगों को। बोलो, मैं आपसे कुछ बोलूं? क्योंकि आप लोग सभी लोग बहुत समझदार हो, मेरा इतना केयर करते हो, मुझे समझाते हो, पर कहीं ना आप लोग भी गलती कर देते हो। दीदी लाइव पर कुछ मत बोलना, आप जो बोलना बात करेंगे बाद में। ओके भैया, जिसको करना मेरे ऊपर टिप्पणी करो। किससे झगड़ा हो गया शिवाजी, और क्यों हो गया? सीमा सिस्टर किससे झगड़ा हुआ बताओ। झगड़ा किससे हुआ है सीमा बहन? सोनू भैया जी, आपको टिप्पणी करने के लिए उसको कम से कम 7 समुंदर का पानी से नहाना पड़ेगा, तब कर पाएगा टिप्पणी। यू आर ग्रेट सोनू सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। पर आप दोनों भाई आपस में क्यों ऐसे लड़ते हो भाई? मेरे ये समझ में नहीं आता है। मैं फिर खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि आप भी मेरे भाई, वो भी मेरे भाई, आप दोनों को मैं क्या ही बोलूं। आप लोग मुझे खुश करने के चक्कर में और टेंशन ही दे देते हो, सच्ची बता रही हूँ। आप लोग सोचते हो हम लड़ लेते हैं तो दीदी खुश रहती है सामने, हमें और टेंशन हो जाता है। मेरा भी दायित्व तो बनता है, जैसे आप सभी भाई मेरा केयर करते हो, मुझे ख्याल करते हो, वैसे मेरा भी दायित्व तो बनता है आप दोनों भाइयों को समझाने का। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के बीच में? टिप्पणी तो हम लोगों जैसे व्यक्ति के ऊपर लोग कर सकते हैं, छोटी मोटी हस्तियों के ऊपर। सही बोला दीदी आपने। दीदी मैं दिए आपको लाइव में आकर मजाक बनाता हूँ। नहीं, मैं एक ही बात आज बोलूंगी दोनों भाई के लिए, सच्ची। आप लोगों के मन में अगर कुछ भी ऐसी भावना होती है एक दूसरे के प्रति,
कुछ भी ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप दोनों लोग आपस में बात कर को समझ लो सच्ची। और मैं आज से ये चाहूंगी आप दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं करेंगे किसी भी बात को लेकर के। अगर आप लोग मुझे बहन मानते हैं तो मेरी लाइफ में नहीं, किसी के भी लाइफ में। अगर देखो इसको बोलते हैं अकड़, अगर ये कुछ बोल दिया सामने वाला उस चीज को, चलो ठीक है भाई समझ के उसको माफ कर दिया। अगर कटाक्ष एक दूसरे की बातों पे ऐसे लेके करते रहेंगे बात बढ़ती रहेगी। इससे दीदी सामने बैठ के खुश नहीं रहेगी भाई, दीदी को भी टेंशन होता है। आपको पता है मैं किस सिचुएशन में हूँ, आप दोनों भाई को अच्छे से पता है इस चीज को, क्योंकि आप लोग काफी समझदार हैं इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं आप दोनों भाई से आज रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों भाई किसी के भी लाइफ में, मेरी नहीं किसी के भी लाइफ में, आप लोग एक दूसरे पे कटाक्ष बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोगों की कोई मन में बात है तो आप सामने से बात आप दोनों लोग कर लो, उस चीज को समझ लो। ओके दीदी, ओके दीदी, मैं ऐसे लाइव में आना बंद कर दिया है। नहीं नहीं भाई देखो, लाइव में आना बंद नहीं, रवि भैया मेरी बात को मानो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि ये बहनों को भी उम्मीद होती है आप जैसे भाइयों से। आप लोग लाइव में आना बंद कर देंगे तो हम लोग क्या खुश रहेंगे, हम लोग भी टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप लोगों को संभालना बहुत वो होता है कि नहीं, हमारी बहनें हैं मजबूरी में तो संभाले, इसका मतलब नहीं कि आप लोग आना बंद कर दो। पर जो बात है उसको गौर से आप लोग उसको अच्छे से आप लोग समझ के करो, आना नहीं बंद करना है। आप भी हमारे वही भाई हैं, वो भी भाई हैं, सब लोग भाई हमारे वो। पर ऐसा हम नहीं देख सकते हैं ना आप लोगों के बीच में आप लोग जो करते हो। आप दोनों आपस में बात कर लो। बिल्कुल सोनू भैया राइट, आपने सही बोला है। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे, दीदी बोलो भाई। आपस में बात नहीं हो पा रही है तो मुझसे कर लो। आप तो देखती हो ना कि हम और पूजा कैसे कैसे मजाक करता हूँ, मैं देखती हूँ भाई, ये तो बात है। अभी इसीलिए संगीता दीदी भी बोल के गई हैं एक बात, आप नहीं आए थे रवि भैया ने तो भी एक ऐसी बातें बोली थी, पता ना पूजा सिस्टर बोली थी, उस चीज़ को साधना दीदी ने समझा के गई हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए लाइव में। तब आप नहीं आए थे रवि भैया, ये चीज़ है इन दोनों भाई बहन में क्या है, हमेशा मजाक चलता है, इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ। दीदी आज मेरी एक भी शब्द गलत बोला तो आप बोल दीजिए, मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। नहीं आपने भी गलत नहीं बोला है, आप आए हैं ना उससे पहले पूजा दीदी और इनके में क्या भारती भाई में हो रहा था आपस में, वो उनको ऐसे बोलती है वो उनको बोलती है, लेकिन आप लोग क्या है ना एक दूसरे की बात को आप लोग अपने ऊपर रख लेते हो, तो फिर वो चीज़ मिलाते हो मैच करते हो, कहीं वो हमको टारगेट करके नहीं लिखा, वो सोचते हैं हमको टारगेट करके नहीं लिखा, इसलिए आप लोगों में विवाद हो जाता है। मैं सच्ची बोलूं, अब ऐसे अपने शब्द को ना, अगर ये अगर मन में भावना आए कि नहीं ये हमारे शब्द से ये जलते हैं या इनको बुरा लगता है, तो सच में ये बात मैं बताऊंगी यहाँ पे, बुरा मत मानना आप लोग, उस चीज को उस बातों को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं हमें ऐसे शब्द नहीं बोले ताकि इनको हमसे चिढ़ हो जाए और कोई शब्द लिखें तो वाद विवाद बढ़ जाए। किसी को नहीं ऐसा करना चाहिए, चाहे आप हो भैया चाहे भारती भाई हो। हम लोग तो आपस में कर रहा था, कोई अपने ऊपर ले ले तो मैं क्या करूं। मेरा जवाब देना दीदी, मैं सुनना चाहता हूँ। कौन सा जवाब भारती भाई बताओ। हमने अपने आप पर नहीं लिया, नहीं हमने किसी के कमेंट का कॉपी करके उससे शब्द को लेकर बोला, लेकिन हमारे वर्ड को लेकर आपने बोला था। और सोनू भैया आप ही जवाब देना। सोनू भैया दीदी मेरे अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं है कि मैं छोटा हूँ नीचे दिखाऊं, लेकिन लोगों के अंदर हमने हमारी वजह से भरी पड़ी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं गलत हूँ दीदी, अब मैं जा रहा हूँ दीदी, अपना ख्याल रखना दीदी। ऐसी बात नहीं है भारती भाई, आप लोग ऐसा बोल के चले जाते हो तो मुझको हर्ट नहीं होता है, बताओ। आप लोग मुझे खुश करने के चक्कर में और टेंशन दे देते हो। मैं वैसे भी डिप्रेशन में हूँ रात से, आप लोगों को पता है। ऐसे बोल के चले जाते हो मैं नहीं आऊँगा, मैं गलत हूँ। गलत कोई नहीं है भाई, आपस में आप लोग दोनों लोग समझने की कोशिश तो करो। ऐसा नहीं करते हैं भारती भाई,
अब मैं समझ गया कि मेरा जवाब मिल गया है। दीदी मेरा शब्द देवता की जब आपने बोला कि मैं कोई चीज़ लाइव में बताऊं तो लोगों को मजाक लगता है, हंसना है, तो इसी बात को लेकर हमने बोला था बस। और हमने कुछ नहीं बोला था तो हाँ अपने ऊपर लेकर चले गए। बाय बाय। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा जवाब देना। मैं किसी पर टारगेट किया हूँ? नहीं, टारगेट नहीं किया हो भाई, ये मैं मानती हूँ, टारगेट नहीं किए हूँ। आप लोग हमेशा ऐसे लाइव में करते हो। मैं ये बात को नहीं बोला भारती भाई कि आपने टारगेट किया है, मैं ये बोल रही हूँ अगर एक दूसरे के शब्दों से अगर एक दूसरे को अपने ऊपर लेके ऐसा लगता है तो वहां रुक जाना चाहिए। मैंने ये कहा दोनों में से कोई एक झुक जाओ, चाहे आप झुक जाओ चाहे वो। मैंने ऐसा नहीं कहा किसी ने कटाक्ष किया, ये तो मैं देखती हूँ हमारे लाइव में। एक दिन मैंने सोनू भैया से भी पूछा था कि भैया ये पूजा सिस्टर और भारती भाई में ऐसा हमेशा होता है, तो सोनू भैया भी बोले थे पूजा सिस्टर मेरे से भी ऐसे करती है। पूछ लो, ये बात लाइव में बोल रही हूँ, सोनू भैया भी हैं। ऐसी बात नहीं है भारती भाई, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ कि कोई कटाक्ष करके एक दूसरे की, लेकिन कुछ तो बात ऐसी होती है जो आप भी ले लेते हो और रवि भैया भी ले लेते हैं। मैं गलत हूँ यदि हूँ तो मुझे घुमा फिरा कर नहीं बोलो, मुझे डायरेक्ट बोलो। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है रवि भारती भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं घुमाने फिराने वाला काम नहीं करती, मुझे ऐसा बोलना होता मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। आपको पता है ना, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ क्योंकि आप भी मेरे भाई, वो भी मेरे भाई हूँ। बहन कभी ये नहीं सोच सकती कि मेरे भाई भाई आपस में अलग रहे, बैर रखें। मैं घुमाने फिराने वाला काम नहीं करती हूँ और आपको अच्छे से पता है मुझे ये चीज़ें काफ़ी पसंद नहीं होती हैं। मैं सीधा सुनना चाहता हूँ, फिर वही बात बोल रही हैं दीदी। मेरी समस्या भी तो समझो भारती भाई, क्यों मैं क्या घुमा रही हूँ बताओ। दीदी मैं किसी के कहने पर या किसी को वह कहने पर हमें बुरा थोड़ी लगेगा, बुरा भी लगे तो मैं आपको थोड़ी छोड़ दूंगा किसी के चक्कर में। और रही बात सीधा सुनने की, तो यह बात सत्य है, उन्होंने मेरे शब्दों को कॉपी करके बोला था, तब हमने इसका जवाब दिया था। नहीं, मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, तो मैं रुका ही था, बैठा ही था, मैं देख ही रहा था, मैं कुछ बोला नहीं था उसके कमेंट पर। रिक्वेस्ट करती हूँ रवि भैया, एक के छोटे बनने से कुछ ऐसा नहीं होता। जहाँ देखो रिश्ता सिमट रहा, अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा झुक ही जाना अच्छा होता है। मैं यही चाहूंगी। अपनी समझदारी कोई भी दिखा सकता है, अच्छा नहीं लगता रवि भैया, पता ना। आप लोग हमें पता हमारे दर्द को बांटने आते हो, पर आप लोग ऐसे लड़ते हो ना तो हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप लोगों को पता है ना, हमको हंसाने के लिए आप लोग हमारे टेंशन को बांटने के लिए आप लोग बहुत कोशिश करते हो, पर जब आप लोग ऐसे करते हो ना तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमें और बुरा लगता है फिर। दीदी आप हमसे बड़ी हैं तो आप बिल्कुल हमारे सामने हाथ जोड़े, आप तो कहोगी मैं वह मान जाऊंगा, जो कहो कि मैं उसे वह बात मैं मानने को तैयार हूँ। इसीलिए आपसे बोल रही हूँ, सभी भाई से बोल रही हूँ, रवि भैया आज के बाद आप मैं बस एक ही चीज़ मेरे से प्रॉमिस कर लो। कोई बात नहीं है, ये अगर आपको ये लगे कि कोई सामने वाला हमको ही लिख रहा, कोई बात नहीं, उस चीज़ को बस इग्नोर कर दिया करो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ सच में रवि भैया, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे से प्रॉमिस कर लो, आप किसी के लाइफ में ऐसा नहीं करना है। आप ही हट जाना भाई, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को कोई टारगेट कर रहा है या मेरे के किसी के शब्द अपने ऊपर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बोल ऐसा समझ के कह रहा है, आप ही हट जाना भाई। मैं बस एक ही प्रॉमिस करवाऊंगी आपसे और कुछ नहीं। मैं खुद ही हैरान रहती हूँ, आप लोगों के बीच में ऐसे क्या रीजन है, मैं समझ नहीं पाई आज तक।
अगर आप दोनों भाई के अंदर कुछ गलतफहमी ऐसी है तो आप लोग बात कर लो भैया। आप लोग भाई भाई हो अपने समाज के हो, पर ऐसा क्यों हो रहा है?
जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, परवीन बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो भैया? जय भीम भैया, जय भीम। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। कैसे हैं? आपका खाना पीना हुआ? हम ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं भैया। थैंक यू। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ बहन? आप बता नहीं रही हो। सीमा बहन बताओ एक बार प्लीज, क्या हुआ? अभी आपका नेट स्लो चल रहा था। स्लो नहीं भैया, फोन आ गया था। परवीन भैया मैं जा रही हूँ ना राष्ट्रपति भवन, अभी उसी लिए फोन आया था। मेरे देवर एक जा रहे हैं ना पीछे गली से, मेरे घर से। मैं जा रही हूँ। अब मैं लाइव भी एंड करूंगी क्योंकि ना मेरे बड़े ससुर की कल डेथ हो गई थी। परवीन भैया जी कल ना मेरे बड़े ससुर की डेथ हो गई थी। सब लोग गए हैं, मैं ही नहीं गई हूँ। और मैं इतनी टाइम जा रही हूँ। अब फोन आया था हस्बैंड का भी कि आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ। अब कोई जा रहा है तो उन्हीं के साथ मैं भी जाऊंगी, बच्चों को घर पे छोड़ के जाऊंगी। क्या हुआ सीमा बहन, एक बार बताना आप, क्या हुआ? बताओ बहन प्लीज, जल्दी बताओ क्या हुआ आपको। बताओ सीमा बहन क्या हुआ?